So, welcome all of you, my all beloved seekers of personal knowledge and growth. So, today we are going to start a new series on public speaking. And this is going to be a long series, so it will be conducted in multiple parts. Today will be the first part, where we will start with the basics. Throughout this series, you will be learning what is public speaking, you will be learning the benefits of public speaking. आप जानेंगे कि public speaking क्यों effective है और public speaking या speaking in general is so important in why it is so important in our lives and what are the benefits and then how to do effective public speaking most importantly. So let's get started with this. Okay, so in this first part what will we will learn about the fundamentals of effective speaking, acquiring the basics, and what are the uh, how you can develop confidence, how you visualize your way towards the talk, and how to speak effectively in quick and easy way. Some of the tips you will get started. Fundamentals of effective speaking. How many of you, like, honestly have a fear of public speaking? Why we ask this question is more than 50% of the world population is affected by this. So don't feel that you're not alone in this boat. ये सबको ही डर लगता है. तो स्टेज का नाम सुनते ही लोगों को शिवर्स आने लगते हैं, बुखार आने लगता है, पसीने आने लगते हैं, नी शिवरिंग होने लगता है, जर्क्स आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है. तो ये बहुत बड़ा फोबिया है. तो ये आज इसमें से हम निकलने वाले हैं. ठीक है. But the idea is whatever you learn, whatever you take it, whatever you are able to understand, start applying. So today we will just start with the basics. What are the basics of public speaking? So let's see what are the basics. Point number one: learn from the experience of others. Those of them who are good speakers, you can listen to them. तो कोई भी स्किल है, सीखना है, नए सिरे से हमेशा कभी स्टार्ट नहीं करना है. You always have some examples to relate to. There is no such person who is born a public speaker. So this means you're not alone. कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बचपन से ही who is very good directly on public speaking. It's a new skill, it's a powerful skill, and it's a meta learning skill. पब्लिक स्पीकिंग जैसे हम बताते हैं कि कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ मेटा स्किल्स होते हैं. इन अल्टर लर्निंग सेशन में ये मैंने बताया था. स्किल्स मतलब यू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल लाइक कोडिंग और अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, बट मेटा स्किल्स आर द स्किल्स दैट अफेक्ट योर एंटायर लाइफ. इसकी पूरी लाइफ में एप्लीकेशन है. फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन इज अ मेटा स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग कम्स अंडर कम्युनिकेशन. ओके, सो लिसन टू अदर्स टॉक एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. ये बहुत ईजी, बहुत बेसिक, बहुत अच्छा तरीका है ये सीखने के लिए. सो इट्स द बेस्ट वे, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे, one of the basic way to start imbibing public speaking is to listen to others talk. आप दूसरे स्पीकर्स को जब सुनते हैं कि वो कैसे हाथ हिला रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे बीच में एग्जांपल देते हैं, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, कैसा पोस्चर है, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती है. योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स imbibing this information. So the best thing or the simplest way to start is learn from the experience of others. Okay. Next important thing to begin understanding this topic is to keep the goal before you. Goal क्या है? To become a good public speaker. The goal of this session, the goal of this course is to become a good public speaker. तो देखो, कुछ फैक्ट्स हम समझते हैं पब्लिक स्पीकिंग से होता क्या है. देन यू विल गेट एक्साइटेड, मोर एंड मोर एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक. पब्लिक स्पीकिंग इज वन स्किल दैट boosts your professional value by more than 50%. Public speaking itself. And public speaking में आपको पता है, public speaking में when you are speaking to public, you can obviously speak to smaller groups. You can speak very confidently in agile meetings and team meetings and all those things. तो public speaking बड़ा part है. Public speaking में अगर confidence है, mastery है, then you will obviously you'll become more and more expert and champion of speaking in general. तो ये एक ऐसा स्किल है ना जो बहुत ही सारे डायमेंशंस को छूता है लाइफ के. इसको सीखना बहुत ही जरूरी है. Now let's see some points on the slide. Concentrate on what self confidence and ability to talk effectively mean to you. तो अपना गोल आंखों के सामने रखो. मतलब ये स्किल जब सीखने जा रहे हो, ये पब्लिक स्पीकिंग जब सीख रहे हो इस कोर्स के थ्रू, एंड व्हेनेवर यू प्रैक्टिस एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट अप्लाई some of these ideas that you learn today. So what you need to do, you need to keep your goal before your eyes. Point number 2, there is no prediction as to how far the ability to talk well can take you. तो यहाँ पे बताया गया कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है. Sky is the limit. You can actually reach to royal heights of success with this skill. Okay. Then public speaking training is the royal road to confidence, meaning more name, fame, confidence, wealth, relationships, and everything else. As we learned, public speakers are irresistible, irreplaceable, very charming, and their success level is automatically elevated in society. Everybody wants to be around good communicators. Nobody wants to be around loners or the people who cannot speak well. Okay. तो ये क्यों समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस हम पहले हर बार समझते हैं. Whatever session we do, we understand why we are doing it. That's why this goal is important. Okay, let's see a great quote from William James. If you care enough for a result, you will most certainly achieve it. तो केयर में ही सारा राज है. कुछ सक्सेस आपको पाना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई सेशन देना है, कोई सेशन लेना है, इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू देना है, कोई रिपोर्ट लिखना है, पेपर लिखना है, राइट, पोस्ट बनाना है. वट एवर गोल यू हैव, वट एवर टारगेट यू आर वर्किंग ऑन, वट एवर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन, इफ यू केयर एनफ फॉर इट, if you start caring enough for it, you will achieve it, because all your energies, all your hidden powers will be aligned towards that goal. प्री डिटरमिन योर माइंड टू सक्सेस. कोई भी सक्सेस हमने पढ़ा है, कोई भी चीज वर्ल्ड में अचीव बनने से पहले दो जगह वो बनती है.
एक बार आपके माइंड में तैयार होती है पहले। फर्स्ट यू कंसीव समथिंग इन योर थॉट। ये हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी सीरीज में भी समझा था। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द मेंटल प्लेन देन इन द फिजिकल प्लेन। ओके, तो प्री डिटरमाइन योर माइंड टू सक्सेस। तो सक्सेस भी कैसे आती है? जब आप सक्सेस को माइंड में बनाते हैं, पहले सक्सेस के बारे में बिलीव करना शुरू करते हैं। बाय चेंजिंग अवर थॉट्स वी कैन चेंज अवर लाइफ्स। कितनी बड़ी बात है, देखो ये। वी एंड अप ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस, वी एंड अप ब्लेमिंग द फैमिली और अदर पीपल, बट इन द एंड व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस इज टू स्टार्ट ओनिंग, टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हेन यू चेंज योर थॉट्स यू चेंज योर लाइफ्स। तो सक्सेस कहा तो सभी चीजें आ गई उसमें। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी ये अप्लाइड है। आप क्या करोगे? यू विल विजुअलाइज योरसेल्फ वॉकिंग कॉन्फिडेंटली ऑन द स्टेज एंड डिलीवरिंग योर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। इफ यू वांट टू डिलीवर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन यू विजुअलाइज योरसेल्फ डूइंग इट। आप नेगेटिव थॉट्स प्लांट करोगे, नेगेटिव थॉट्स रीप करोगे अपने माइंड के टेलर से, माइंड के बैंक अकाउंट से, तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलने वाले हैं। इफ यू स्टार्ट रीपिंग, फर्स्ट सीडिंग, सोइंग एंड देन हार्वेस्टिंग पॉजिटिव थॉट्स फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द हार्वेस्ट, फ्रॉम द फार्म ऑफ योर इनर माइंड, वही आपको मिलने वाला है रिजल्ट। ओके, द विल टू सक्सीड इज अ वाइटल पार्ट इन बिकमिंग एन इफेक्टिव स्पीकर। सो द विल टू सक्सीड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, not only being an effective speaker but effective listener, or being an effective CEO, or being an effective team member, or being an effective leader। कुछ भी आपको जीवन में करना है, सक्सेस के किसी भी डायमेंशन को आपको पाना है, द फर्स्ट रूल इज विल टू सक्सीड। सो इफ यू आर अ नेगेटिव थिंकर देन यू नो प्रीटी मच you will not do much. So the will to succeed is the beginning. Seize every opportunity to practice. ये देखो, ये डायरेक्टनेस वाला प्रिंसिपल है। फिर से यू वांट टू बिकम अ स्पीकर, स्टार्ट स्पीकिंग, है ना? मौका मिल रहा है, टीम्स में बात करने का मौका मिल रहा है, इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, सेशन देने का मौका मिल रहा है, डू नॉट अवॉइड इट, गो फॉर। क्या होगा? हंसेंगे एक दो बार लोग, नहीं प्रिपेयर करोगे, अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा, आवाज अच्छे से नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, यू विल लर्न फ्रॉम इट, राइट? बट यू विल गेट बेटर एंड बेटर विद एवरी सेशन। सो दिस इज वन टिप फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट गो फॉर इट, डोंट टेक अ बैक सीट। तो जब ड्राइव करने के लिए बोला जाए, ड्राइविंग सीखना है, तो पीछे की सीट पे मत बैठ जाओ जाके, राइट? स्टार्ट ड्राइविंग। द मोर यू डिलीवर एंड लर्न द बेटर योर कॉन्फिडेंस इन स्पीचेस विल बिकम। So as I said, the more you keep doing it, the better you will. Facts about fear of public. ये fear क्यों है? ये fear कैसे है? और ये fear के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। You are not unique in your fear of public speaking. We started with this question, right? Most of us learned that most of us have this fear. तो ये क्यों है? We are not unique because most of people cannot do it confidently. A certain amount of stage fright is useful. Nature's way of preparing you to meet unusual challenges in the environment. कोई कितना भी अच्छा स्पीकर होगा तो थोड़ा सा स्टेज फ्राइट आता ही है, उनको भी आता है। तो जब किसी अच्छे से अच्छे स्पीकर को भी बोला जाता है ना कि लेट्स हैव सम वर्ड्स फ्रॉम यू, एंड पीपल स्टार्ट क्लैपिंग एंड द फोकस एंड द स्पॉटलाइट इज ऑन द पर्सन एंड ही हैज टू वॉक टुवर्ड्स द स्टेज। अब उसे पता है सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? दिस मींस इट दैट फियर इज एन इंडिकेशन फॉर यू टू प्रिपेयर बेटर। देन मेनी प्रोफेशनल स्पीकर्स नेवर लॉस्ट ऑन स्टेज फ्राइट, ये मैंने ऑलरेडी बताया। सो लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी बिकम ग्रेट स्पीकर्स, उनको भी ये डर आता है, उनको भी थोड़ा सा तो डर आता ही है स्टेज पे जाने वक्त या स्टेज पे जाने के पहले। जब उनका नाम पुकारा जाता है तो दे ऑल्सो गेट फियर। चीफ कॉज ऑफ फियर इज सिंपली यू आर अनअकस्टम्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक। ओके, दिस इज द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल टू डू इट, ऑल इज दैट, बस उतना ही है, आपने ज्यादा बार किया नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी जब आप एनफ टाइम्स बात करोगे तो वो डर चला जाएगा। थोड़ा बहुत रहेगा, वो आपकी हेल्थ बेनिफिट के लिए, वो आपकी प्रिकॉशनरी बेनिफिट के लिए, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड बेटर, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट, सो दैट योर पोस्टर, पॉइस, क्लोथ्स, प्रेजेंटेशन इज गुड इनफ। सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ द फियर, वॉक थ्रू इट एंड मेक इट अ स्टेपिंग स्टोन। अभी हम देखते हैं प्रिपरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दो तरह के स्पीचेस होते हैं टोटल। एक होता है प्रिपेयर्ड स्पीच, ठीक है, एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ स्पीचेस जो व्हिच इज कॉल्ड एज इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रोव हमने सुना है, इम्प्रोव कॉमेडी होता है, इम्प्रॉम्प्टू होता है। इम्प्रॉम्प्टू में आपको इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक दिया जाता है, सो प्रिपेयर इन द प्रॉपर वे। तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली द प्रिपेयर्ड स्पीकर डिजर्व्स टू बी कॉन्फिडेंट। अब ये देखो कितनी अच्छी बात कही है, कॉन्फिडेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेशन। The more prepared you are, the better your confidence will be. So you should prepare better. In the idea, the bottom line is you should prepare better. जिस टॉपिक में आपको नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक में तो प्रिपरेशन के बिना आपको स्पीच देना ही नहीं, because your confidence will not even start. It will not even reach up to 3 or 4 on the level of 10. क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? ओके, नेवर मेमोराइज द टॉक वर्ड फॉर वर्ड। तो ये देखो, ये टिप किसी के काम की है। आई से यस, नेवर मेमोराइज वर्ड फॉर वर्ड, बट कुछ लोग ये करते हैं। So the idea is, yes, some of these tips will work for some people, but the good point is don't memorize word for word. Understand the gist of your topic. Okay? For me, this tip is good. So I never prepare word to word. Some people prepare word to word, but don't prepare word to word. The idea is to understand, because preparing word to word is riskier. Just read it like a story, read it like a main gist, then create some, summarized points that you're going to talk about. Maybe even if you forget on stage, आप cards लेकर जाओ, main points को देखकर बात करो. Then third point is assemble and arrange your ideas before. तो थोड़ा सा पहले रिसर्च शुरू करना चाहिए। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सम टॉपिक, यू शुड असेंबल योर आइडियाज, डू सम रिसर्च अराउंड इट। गूगल इज देयर, जीपीटी इज देयर, लॉट ऑफ एवेन्यूज आर देयर। आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर ले एंड यू सम ब्रॉड लाइन, मेक एन आउटलाइन ऑफ द ब्रॉड आइडियाज, रिहर्स योर टॉक विद अ फ्रेंड।
or with parents or family or colleagues or anyone or even that same group. Predetermine your mind to success. ये हमने थोड़ा सा समझा था, माइंड को मैग्नेटाइज करना है. लेट्स मी जस्ट रीड दिस पॉइंट. लूज योरसेल्फ इन द सब्जेक्ट. तो ये हमें पता है. देखो, कोई बड़ा टॉक होता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ और डेथ सिचुएशन टॉक है, या आपकी करियर सक्सेस और फेलियर इस पे डिपेंड करता है, देन यू हैव टू बी वेरी मच बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी बेसिकली डेडिकेट योरसेल्फ अ लॉट इन दैट टॉपिक. तो सब्जेक्ट में खो दो खुद को. अगर इतना डीप टॉपिक है, इतना आपको अच्छे से देना है, सो द मोर यू प्रिपेयर द बेटर यू हैव योर कॉन्फिडेंस इन दैट. लूज योरसेल्फ का मतलब है पूरा उसमें डूब जाओ. कीप योर अटेंशन ऑफ द नेगेटिव्स. तो जो नेगेटिव बीच बीच में योर माइंड विल स्पर ऑफ नेगेटिव थॉट्स, ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स है, ऐसा है वैसा, तो उन सब चीजों से दूर रहो. कंटिन्यू टू फोकस ऑन योर पॉजिटिव. गिव योरसेल्फ अ पेप टॉक. तो टॉक देने से पहले टॉक दो खुद को, एक पेप टॉक दो. हम अपने ही कंधे पे टैप करते हैं, खुद को बोलते हैं गुड जॉब, गुड बॉय, गुड गर्ल, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग, सेल्फ मोटिवेशन, ऑटो सजेशन, दिस इज वेरी मच नीडेड इन दिस कॉम्पिटिटिव एज वेयर नॉट एवरीवन विल अपलॉड यू. ओके, एक्ट कॉन्फिडेंट. अभी ये अलग हम एक टिप समझ. नाउ इन ऑर्डर टू एक्ट समथिंग यू हैव टू फील इट. ओके, बट उल्टा भी होता है. इफ यू स्टार्ट एक्टिंग देन यू स्टार्ट फीलिंग. तो एक्ट कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं भी है ना, अंदर डर लग रहा है लेकिन एक्टिंग करो कॉन्फिडेंसली. अंदर रोना आ रहा है लेकिन हंसने की एक्टिंग करो. अंदर यू आर स्केर्ड टू डेथ, लेकिन स्टेज पे ऐसे दिखाओ कि यू एवरीवन ओज यू मनी, राइट? एवरीवन ओज यू मनी. वी हैव दिस गुड पॉइंट हियर ऑन द स्लाइड ऑल्सो. सो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. Act confident. Even if you don't have that confidence, start acting it, because acting and feeling are related to each other. अगर आप फीलिंग में हो उस, तो वैसा एक्शन होने लगता है. अगर आप वैसी एक्टिंग करते हो तो वैसी फीलिंग भी आने लगता है, राइट? ड्रॉ योरसेल्फ अप टू योर फुल हाइट एंड लुक इनटू योर ऑडियंस स्ट्रेट इन द आईज. है ना? ऐसे जैसे कि सबने सबने आपको पैसा देना है. बिगिन टू टॉक कॉन्फिडेंटली एज इफ समवन एवरीवन ओड यू मनी. अभी ये क्विक एंड इजी वे का जो कोर्स है, स्पीकिंग इफेक्टिवली इन क्विक एंड इजी, इसकी तरफ हम जा रहे हैं. विल लर्न सम ऑफ द मोर टिप्स. स्पीक समथिंग यू अर्न द राइट टू. तो जो भी टॉपिक है, you have earned the right to talk about it. Make sure you don't choose the topic you don't know anything about. Tell us what life has taught you. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. पब्लिक पर्सनल स्टोरीज ऑलवेज वर्क. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टोरीज: पर्सनल स्टोरीज, secondary stories, and third level stories. Personal stories are personal stories. Secondary stories are stories about some other people in third person, and third level stories are product or service or company or brand stories. Personal stories always work best. So because personal stories आपके साथ हुए हैं, तो आप इवोक हो जाते हैं, आप जाग जाते हैं. यू आर रीलिविंग दैट एक्सपीरियंस. आप अपने लाइफ के बारे में जब किसी को बता रहे हो, ओके, लुक फॉर टॉपिक्स इन द बैकग्राउंड. ये है कि कुछ नए टॉपिक्स ढूंढो, रिसर्च करो अच्छे से. डोंट जस्ट, ये ऊपर ऊपर की चीजें हैं जैसे कि हाँ 10 टॉपिक या 10 टॉपिक में से एक चुनना है, तो आपने ऊपर ऊपर का जो अट्रैक्ट कर लिया वो देख लिया. थोड़ा आप डीपली देखो. लुक फॉर टॉपिक्स इन द बैकग्राउंड. डू सम रिसर्च. अर्ली इयर्स एंड अपब्रिंगिंग, अर्ली स्ट्रगल्स टू गेट अहेड. ये पूरे आपके लाइफ के बारे में एग्जांपल्स हैं. क्या समथिंग यू हैव अर्न द राइट टू स्पीक. Every person has a story. हम सुनते हैं, right? Everyone has a story to tell. Everyone has a story to narrate. वो कौन सी स्टोरी है? वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी स्टोरीज है. And make sure you are excited about the subject. If you are not excited, people will not hear. As I said, passion is one great recipe, okay, for making your talks interesting. There are three key secrets identified with the acronym MEN. MEN. MEN होता है ना? तो MEN acronym से हम याद रख सकते हैं. The 3 key secrets of making any TED talk or any talk for that matter interesting. Okay, M for memorable, E for emotion, N for novel, new. So novelty, arousing emotions, and memorable talks. ये तीन जो है, ये key principles हैं that make every TED talk, that make every talk interesting. You can also remember from this. So passion is one of the recipe of emotion. Emotion के अंदर passion आता है, storytelling आता है, and so on. Put yourself into the talk. So put yourself into the talk मतलब खुद को डालो उसमें, जान डालो अपनी. टॉक दे रहे हो तो टॉक में खुद भी आओ. सोते मत रहो कि चलो ये निपटाना है और घर जाना है. ऐसा नहीं है टॉक. A real life picture of anyone's life told modestly is a sure fire material. तो ये थर्ड पॉइंट के बारे में तो हमने पिछले साइड पे बहुत सारा बात किया. Your life story has a lot of enriching experiences that you can make a story out of, and a real life picture of anyone's life, of your life or your friends. Okay, great. Be eager to share your talk with the listeners. Eagerness is another principle. Eagerness क्या होता है? Eagerness is different from excitement. देखो, बच्चे ईगर होते हैं. आपको कोई गिफ्ट मिलता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है, हम ईगर होते हैं तुरंत वो शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ. कंटेजियस थिंग्स, वायरल थिंग्स, वी इमीडिएटली वांट टू कॉल फ्रेंड्स एंड शेयर विद देम. ये क्या है? एक्साइटमेंट भी है, ईगरनेस भी है. यू आर ईगर टू शेयर योर टॉपिक. सो व्हेन यू आर ईगर टू शेयर योर टॉपिक विद द लिसनर्स, they will read you, they will understand your motive, they will understand your happiness in sharing. 3 factors are there. Okay, there are 3 factors in every speech. अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो एक स्पीकर होता है, एक स्पीच होती है, यानी कि मटेरियल होता है, द प्रेजेंटेशन दैट वी आर डूइंग, द कंटेंट, राइट, द कंटेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड देन देयर इज एन ऑडियंस, राइट? यू गाइस आर लिसनिंग टू इट. पॉइंट नंबर 2, ओनली व्हेन द स्पीकर रिलेट्स हिज टॉक टू अ लिविंग ऑडियंस विल द टॉक कम टू लाइफ. ठीक है? तो ये तीनों चीजें जो है ना, ये अलाइव है, ये मरी हुई नहीं है. स्पीकर तो जिंदा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो और ही और शी इज टॉकिंग,
ऑडियंस इज ऑल्सो अलाइव। ऑडियंस, देखो ऑडियंस को हम बोलते हैं ना, डोंट बोर देम टू डेथ। क्या मतलब होता है इसका? कि ऑडियंस सो गई है आपके इसमें, बोर हो रही है, यॉन कर रही है, घड़ी देख रहे हैं, एग्जिट डोर को देख रहे हैं, सब कब खत्म होगा। ऐसे भी टॉक्स में हमने देखे हैं, वी कैन रिलेट टू सम ऑफ दीज इवन फ्रॉम यूट्यूब, इवन फ्रॉम रियल लाइफ टॉक्स। तो कुछ टॉक्स इतने बोरिंग है कि आप भाग जाना चाहते हैं, कुछ टॉक्स इतने अच्छे हैं कि आप उठना ही नहीं चाहते, वो स्पीकर खत्म ही नहीं करे, आपको लगता है बोलता ही रहे बोलता ही रहे। ऐसे भी टॉक्स होते हैं। व्हेन द स्पीकर इज पैशनेट, व्हेन द स्पीकर इज ईगर, व्हेन द स्पीकर इज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन, द टॉक कम्स टू लाइफ, द टॉक इज अलाइव। तो ये तीन चीजें जब जिंदा हो जाती है, then the speech happens, the right speech, public speech happens. Okay, so with this we will take a pause here, and this topic, as I said, is going to continue